this evening. Professor Vidhu Raval is spokesperson of the Haryana BJP. He's joining us on the broadcast for obvious reasons. There are some straight questions I want to ask him. Advocate Mahima Singh is spokesperson of the Congress Party, joining us on the broadcast. Dr. Vikram Singh is a former DGP in Uttar Pradesh, again a state that does report honor killings. He's joining us on the broadcast as well. And Priyadarshini Singh is a political actress. She's an analyst. She's an actress as well. She belongs to the state of Haryana, joining us on the broadcast. Professor Raval, I'm going to come to you first with a simple question. This latest couple that we are talking about today had actually sought the protection of the Haryana police. I get married to someone. I fear that my family and the man's family is not going to accept it. In fact, they're going to try and kill me. I come to the police. Then for some reason, I withdraw that request for protection. Was it or was it not the Haryana police's duty to at least ask, why are you withdrawing this request for protection? If you still fear that your families will come and kill you, let us help you. Professor Raval, did the Haryana police urge? Shreya, it is always easy to be wiser after the event. लेकिन जो चीजें हम कह रहे हैं, जो डिस्कस हो रही हैं, ये प्रीमेडिटेट नहीं की जा गई थी. इस प्रकार से नहीं सोचा गया था कि ऐसी चीजें हो जाएंगी. आपका ये कहना कि क्या कारण पता किया गया था कि क्यों उन्होंने इस प्रकार की रिक्वेस्ट को विड्रॉ किया, तो जनरली जब विड्रॉल जो दी जाती है, मैंने उनकी विड्रॉ की हुई जो रिक्वेस्ट है वो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसके अंदर कारण दिया गया होगा किसी प्रकार से, क्योंकि ये जो इशू है, हालांकि वी थॉट कि हम एक लार्जर इशू पर बात करेंगे, लेकिन अगर केवल इस इंस्टेंस पर ही बात करें तो इस मामले में भी सीधे सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक डिस्टेंट कजन्स थे आपस में. उस कारण से हो सकता है कहीं ना कहीं जो परिवार है उन्होंने कोई संपर्क किया होगा, किसी प्रकार का जो मिसट्रस्ट था या कुछ कारण ऐसे रहे होंगे कि उन्होंने ये सोचा होगा कि दे वुड हैव फेल्ट सेफ कि हम बिना पुलिस कस्टडी के, बिना सेफ हाउस के हम इस ओपन सोसाइटी में इस प्रकार से रह सकते हैं. हालांकि उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हुआ है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. बहुत ये शर्मसार करने वाला है और हरियाणवी होने के नाते जरूर जो है ये हम लोगों को एक बार अंदर झांकने की आवश्यकता पर जरूर बल दे रहा है. मैं आई एम ऑन द सेम पेज एज यू कि हमें इस पर जो है जरूर चिंतन भी करना चाहिए और इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दिस फार एंड नो फर्दर. इसके बाद कहाँ हम जा रहे हैं, हम क्या इस प्रकार की एक सोसाइटी चाहते हैं जिस पर इस प्रकार का मतलब इस प्रकार से हम Professor Raval, I agree with you. This far and no further. I agree with you. This far and no further is the spirit with which you need to deal with this issue. But here's the thing, Mr. Raval. The fact is that in the last 7 days, we have 3 such cases being reported. Not one, but 3. Is this the first time that we are seeing honor killings in Haryana? Clearly not. Has there been an attempt to even try and stop them? By the looks of it, no, because if there was an attempt, what we are seeing in the last 7 days we would not have seen. So clearly there has not been a serious attempt, because caste is a very important factor in Indian politics, and that is one thing that most politicians don't want to mess with. श्रेया, मैं आपसे विनम्रता से जो है डिसएग्री करना चाहता हूं इस बात पर. ये 7 दिनों का आपने जो टेन्योर बताया, इससे पहले भी इन 7 दिनों में पहली ऑनर किलिंग नहीं हुई, इससे पहले भी हुई हैं. हालांकि हर ऑनर किलिंग हमें शर्मसार करती है, लेकिन क्योंकि आप स्पेसिफिकली इन 7 दिनों पर जोर दे रहे हैं, तो इन 7 दिनों पर ही बताएं कि किस प्रकार से इनमें एक ऐसी किलिंग है जिसमें क्रिमेट कर दिया गया था, डिसीज को क्रिमेट कर दिया गया था, और उसके बाद पुलिस ने जांच कर ये पाया कि वो जो है हार्ट अटैक नहीं था, वो एक किलिंग थी. तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं जो है, हालांकि ये दुखद समय है, इसके बावजूद भी अगर मैं श्रेय लूटने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात ये, दूसरा कि ये 7 दिन से पहले भी बहुत चीजें होती रही हैं, वो भी हमें शर्मसार करती हैं. अभी जरूरत है, जैसे फरवरी के अंदर जो है हमारी विधानसभा के पटल पर एक चर्चा हुई थी, सदन के अंदर चर्चा हुई थी. हमारी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अनिल विज जी ने कहा था कि हमें इस प्रकार से कुछ एक ऑनर किलिंग पर एक स्पेसिफिक लॉ लाने की आवश्यकता है ताकि डिटेरेंट हो. अगर वो डिटेरेंट जो है, वो एक डर जो है वो भी आवश्यक है. एक और मैं मामला जो है छोटा सा बताना चाहता हूं, जहां पर आकर
खुद जिसने कत्ल किया है वो खुद जाकर अपने आप पहले फेसबुक पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालता है और उसके बाद खुद जाकर जो है अपने आप जो है सरेंडर करता है। तो मतलब ये इस चीजों को हमें सोशली भी टैकल करने की आवश्यकता है। डिटरेंट तो तब होगा जब अगर अपराधी को जो है इस बात का डर होगा कि सजा मिल जाएगी, तो वो सजा को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जुर्म कर रहा है। ये एक बड़ी चिंतनीय विषय है और मुझे लगता है इसमें हमें पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा नहीं इसको छेड़ना चाहिए। ये एक सोशल मैनेस है, इसको हमें डील करना चाहिए सोशली। Advocate Mahima Singh, the spokesperson of the Haryana BJP, is saying this is not, that's okay. I'm addressing my question to Advocate Mahima Singh now. Advocate Mahima Singh, you're representing the Congress party here. The BJP spokesperson is saying that this is not a political menace. This is not this is a social menace, and please don't make this political. I'm asking you a simple question. Do you agree with all that Professor Vidhu Rawal has said, that what can the police do beyond a point? If someone withdraws their protection request, what can we do? And it's not like we can second guess what the family of an eloped couple is going to do. So why blame us? We in any case are thinking of bringing a law, an act against honor killings. Will the Congress party support it? Jai Hind. Shreya, the BJP has totally lost touch with the ground, with the public issues. In fact, I must say that fraught with women offenders, fraught with crimes against women as a part of its track record now of last 10 years, the BJP's modus operandi, and it is running a minority government in Haryana shamelessly, by the way, their modus operandi is to neglect, to live in denial of the public issues, and then do false public posturing, is what we saw on your show also right now. I'll tell you why. You would remember the shameful case of the sports minister in Haryana, Sandeep Singh. Crimes against women were recorded against him. You would also remember Sonali Phogat's brazen killing by her close aide. She was a BJP leader. You see, it's the perception that a government builds. When the UPA was in power, in 2010, Shreya, we attempted an amendment in Section 300. We brought a bill. Then 242nd Law Commission actually said that, okay, we can't, let's not do this amendment, rather bring a new bill. In 2011, the 242nd Law Commission suggested a bill to prohibit law killings, honor killings, which was the prohibition of unlawful assembly, interference with the Freedom of Matrimonial Alliance Bill 2011. Somehow it did not see the light of the day. But the BJP has not done not only anything in the last 10 years to avoid it, but under the BJP, where crimes against women have gone up on every record. The gulf of inequality has only been widened time and again. Honor killings is a matter of perception. It's a matter of let's get back to the subject. But that is, and it is very much the subject, Shreya. I'm talking about law pertaining to honor killings, which the UPA attempted to bring. Somehow we could not bring it. 2014, the BJP came into power both in the center and the state. That is what I'm talking about here. But the BJP has not only not done anything to cover up that gulf. Rather, the Dr. BJP Vikram Singh has Dr. Vikram Singh, please come in here. They have promulgated the term of love.